Yes. I think this is completed or not? This is completed? This program is completed now? Yes. Yes. All the lines I have explained? Yes, okay, so now we will use next one. Okay. Okay, I will share this code. Okay, attendance verifier also there. So today we will discuss this one. Okay. Just check and when I will see. Okay, just switch off light. It is all. Now visible everyone? Yes. Okay, so now see. In last class, whatever I explained, that was the prototype simply you can say. That was that how to use the face recognition library for the face match. Just let me explain again. This was the code. Let me run this. So as you can see, both faces are there. And since both faces are same person, that's why the distance is what? I have already explained all this. So now this mechanism we will use to work on our project that is called attendance system using face recognition. Clear? So all these things that I have explained in the last class I will use in this project. Clear? Only difference is that in that class we were taken the images in both the text as well as train image. But in this class we will only take train image and we have to use the text image from the camera only. Yes or no? हम कैमरे के सामने जाएंगे तब तो सिंक्रोनाइज करेगा ना. तो कैमरे के सामने जाना दैट इज कॉल्ड टेस्ट इमेज. वो हमने लास्ट क्लास में क्या किया इमेज लिया था उसकी जगह. अब हम उसको कैमरे से करेंगे. सो पहली बात जितने भी हमने पार्ट्स जितने भी लाइंस में यूज किए जितने भी फंक्शंस यूज किए हैं जितने भी हमने लाइब्रेरीज यूज किए हैं सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा. यस सर. If you are having any problem with any library any line you can just tell me. Okay, let's see. This is the attendance protection. Yes or no? Also we are having some images. Where is my folder? I think this is my folder or this is my folder. Actually I have created folder also. Where is my folder? Actually I have created a folder also. This one is no, I created folder also. Image folder I think. Where is along? Yes, this is along. Why you are using this? Just tell me that is this having face? This image is having face. Then why you are using this type of image? Clear? Okay, so always remember we are working on. Always one more thing that you have to remember that when you are entering the faces or the images of the employee in your system, attendance system, just ask for the passport size photograph. Not simple photograph that in which only that person is there and no other persons are there. Single image, single face image you need. Clear? Then and also try to use that kind of image in which there is no any background. Bus is there, truck is there, objects is there. So just use simple background image. Clear? So that our algorithm can recognize this for you. If you have internet access. Okay, just listen to me. I will explain all this. Don't worry. So basically, I am going to explain all these things. Visible, everyone? Yes, sir. Okay. So right now you can see we are having how many libraries? 1, 2, 3, 4, 5. Yes or no? So 5 libraries are there. Why we have used NumPy? As I told you, I will explain NumPy, upcoming classes. But to only
because I have used, what happened to you? Yes. Yes. Stand up. No. Last one. Just use stand up. Yes, next, just listen to me. NumPy, because I have used one or two functions of NumPy. That's why I reported NumPy. Next, face recognition you already know. Because you have to detect the face, you have to find the encodings, you have to load the images. That's why we are using face recognition. CV2 you also know. Yes or no? All these libraries I have already explained that we are using in this project. Yes, one OS is new for you. Yes, no? OS is also a library. It is named as operating system. You know, in operating system right now we are saying that it is a folder, it is a file like this. But earlier in operating system we used to say that directory. Folder was directory. Both are same, but the name was used as directory. Means अभी जो folder कहते हैं वो क्या है हमारा directory. Okay. So if you want to create a directory, means you want to create a folder. If you want to get the details of the folder, if you want to copy the files inside the folder from one folder to another folder, then we use open OS libraries. So that's why we are having many functions inside it. So just you have a task, just write something somewhere. You have to go to your home and you have to search for the OS library. What are the functions available in this library? Here, very important library. This will help you in many projects. Clear? So just go and research the types of function and which kind of function available in this. Here and what we can use, where we can use. Here, one of them we are using right now, that is called list dir function. We are using list dir function. List dir function. So this is the name. Means suppose if you are having a folder. Suppose we are having folder. Visible it is. Image folder is there. And how many files are there inside this folder? 1, 2, 3 files are there. Yes or no? Clear? So we want to access. If we want to list out all the files of that folder, then we will use list dir. Clear? What I told you? When we want to list out, means हमें listing करना है सारे files को जो कि उस folder के अंदर में, तो हम क्या use करते हैं? And also you can see in this project. So just let me take one separate, Python file. So let me take. This is what should be the name? Attendance. Clear? So this is the name of the project. I have created separate, I have created separate Python file. Clear? So now just copy it. I will explain each and everything step by step. Clear? So right now let me copy all these things. Clear? Okay. Right now you just focus on this and this only. Clear? Don't focus on images and class name. Clear? So just see. Just tell me which folder I want to use for the photograph or images. Just tell me. The folder is what? Images. Yes or no? Images is the folder. Then I will create a variable with name, path, and I will give the folder name or the directory name that we want to access. Clear? And what we want? We want to get all the files inside this. What happened? So now, just see, I have created a path variable in which I will store the folder. And suppose I want to access all the files inside this folder in a list. So that's why we are using list dir. So just see what does function do. So return a list containing the names of files in the directory. It will give you all the file name in a list. Clear? So just see how it will be. Okay, now tell me
you have to provide the path of the folder or the directory that you want to use. Clear? And then I am going to store all the data that whatever it will give us, it will store in the my list variable. It is also a list. Just print this and see what is the result. So run this attendance and you can see. As you can see, we have got one list. Yes, everyone. We are having all the images that we are showing in the image folder. Yes or no? Yes. As you can see, cover is there, image is there, issue.jp is there. Yes or no? Yes. So for this purpose, we are using OSLab because we are using list dir function. That is the function of OS module. Clear, everyone? Okay. So now see, if we are going to print, we will get this list. So now focus on second part. Now focus on second. I will explain all these things line by line. Here. Is this visible? Yes. Just focus. You know, I have taken two empty lists. This is called empty list. Yes or no? You all know? This is empty. Is there any member or the element in this list? No. That's why it is called empty list. Now focus on this. You already know what is the purpose of this. Okay. So what we want is what we want. Two things we want. What first we want, you know, images are only for us. Yes or no? But for OpenCV or for face recognition, it is what? It is just a numpy value. Yes or no? It is numpy value. So we want to read all the images one by one, whatever is that inside this folder. And what we will do? We will get the corresponding numpy value. Here, all that numpy value will be stored in this list only. Means मैंने क्या बोला? इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी फाइल्स उसको हमें क्या करना है? रीड करना है. क्या करना है? रीड करना है. ठीक है? रीड करने के बाद वो किसमें चेंज हो जाएगा? नंपी वैल्यू. और उसके बाद हर एक इमेज के नंपी वैल्यू को कहां स्टोर करने वाले हैं? इमेज वाले लिस्ट. ठीक है? ताकि बाद में इंपोर्टिंग कर सके इसको. मैं बताऊंगा आपको. ठीक है? अभी हमें इसमें करना है. और ये क्यों है बताइए? ये रीजन ये है कि जब हम किसी पर्सन का इमेज सेट करेंगे, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जब किसी पर्सन का इमेज सेट करेंगे तो उस इमेज का नाम क्या होगा? एडिट कर देंगे हम उसके पर्सन के नाम से. जैसे मान लो आपने मेरा इमेज सेट किया, आपने मेरा इमेज रखा. अभी देखो मैं बता देता हूं. तो जैसे अभी जो हमने यूज किया है, क्या 3 इमेजेस यूज किया हमने. ऐसा ये इमेज दिख रहा है आपको, इसको हम एडिट करेंगे. ये किसका इमेज है? मान लो अलोन का. तो हम कैसे करेंगे इसको? रिफैक्टर में जाएंगे और रीनेम यहाँ पे विजिबल होगा. क्लियर? यहाँ पे हम लिखेंगे अलोन. क्या लिखेंगे? क्लियर? एंड वी विल जस्ट इसी तरह से मान लो इसको, ये इस पे इशू लिखा हुआ ऑलरेडी. वैसे जिस पर्सन का हम इमेज यूज करेंगे ना, उसके नाम से इमेज सेव करेंगे. ठीक है? तो ये इमेज तो काम का है ही नहीं, तो इसमें तो फेस ही नहीं है ना. चलो कोई बात नहीं, अभी हम बस एग्जांपल के लिए चलते हैं. क्यों करेंगे ऐसा बताओ मुझे. Why we are storing the images with their name? Because this name will be used for the reference in future. जब लास्ट सामने, जब कोई पर्सन सामने आएगा ना, इसी नेम से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. जब मान लो आप कोई एलन मस्क तो आएगा नहीं यहाँ पे, पर उसकी इमेज को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बताएगा? एलन. क्योंकि हमने इसके फाइल के नाम में क्या रखा है? अब मान लो रिशु का इमेज में रखूंगा तो ये क्या बताएगा? रिशु. तो जिस पर्सन का इमेज लेंगे उसी पर्सन के नाम से सेव करेंगे उसको, और वही नाम हम बाद में यूज करने वाले रेफरेंस के लिए, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए. क्लियर? तो इसीलिए हमें उस नाम को क्या करना होगा? एक्सेस करना होगा या नहीं? बताओ, एक्सेस करना होगा या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पहली बात तो ये समझो कि इसका मतलब होता है.
पहली बात एफ इसका यूज कभी किए हो? कभी कुछ नहीं होता है, इसका काम है बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। क्या करना? स्ट्रिंग जो भी डेटा मिलेगा ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। अब समझो, सपोज मैंने क्या बोला, अभी हमारे पास ये तीन इमेजेस हैं, क्या क्या है बताओ। इस पहले वाले का पाथ क्या होगा बताओ मुझे। पहले तो इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन क्या होगा? कवर डॉट। सेकंड इमेजेस का पाथ क्या होगा? और एलोन डॉट पीएनजी। थर्ड इमेज का क्या होगा पाथ? क्या है? यही है। हमें सबको एक्सेस करके तभी तो हम नंपाई अरे में रीड कर पाएंगे उसको। तो हमें सारे इमेज को चाहिए। अब बताओ मुझे, क्या हम यहाँ पर ये पूरा पूरा लिख सकते हैं क्या? खुद से कि मैन्युअली करेंगे तो क्या होगा? अब हमको ये लिखेंगे तो हमेशा के यही रहेगा ना। क्या हम हमेशा कोड को फिर से चेंज करने के लिए जाएंगे मैन्युअली? नहीं, हम ऐसा नहीं, हम ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको अलग रखेंगे। वेरिएबल है, इसका नाम क्या है? पाथ। याद हो, इसको हम अलग रखेंगे, इसके लिए सीएल यूज करेंगे। देखो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से, जस्ट मुझे रन करने दो इसको फिर से ताकि आपको अच्छे से दिखे। अभी मैं चेंज किया था। अब ये सारे नाम है हमारे पास। अब होगा क्या? देखो माय लिस्ट में क्या है बताओ। ये कौन सा लिस्ट है बताओ, इसका नाम क्या है? माय लिस्ट ही है ना इसका नाम। माय लिस्ट, यस और नो बताओ मुझे। यस, क्योंकि ये जो हमें लिस्ट मिला था वो कहाँ पे स्टोर है? माय लिस्ट वेरिएबल। तो माय लिस्ट ही तो ये आउटपुट आया। देखो मैंने प्रिंट किया था यहाँ पे, और ये जो आउटपुट मिल रहा है आपको वो इसका मिल रहा है। अभी इस पे फोकस मत करो, मैं समझाऊंगा। अभी ये हमारा माय लिस्ट है, तो हमें क्या करना है? पहले इमेज को रीड करना है। कैसे रीड करेंगे बताओ? पूरा पूरा चाहिए तभी तो रीड कर पाएंगे, बट साथ में ये भी नहीं चाहिए, इसका पाथ ये भी चाहिए, तब कंप्लीट पाथ मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं अब बताओ। ये इन ऑपरेटर पढ़े हो तुम? What is the use of in operator? It is called membership operator. So it will just find that something is in list order. So देखो my list में है क्या? ये सारे वैल्यू है my list में। तो पहला वैल्यू क्या होगा? ये लेगा CL। फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर CL इन my list। मतलब क्या होगा कि my list से पहला वैल्यू उठा के कहां रख देगा? CL के। So now CL is representing this. Yes or no? ये पहला वैल्यू है। हमें इसको हमें पूरा पाथ चाहिए ना। हेल्प कौन करता है हमें? एफ फंक्शन। होगा क्या? देखो ये लिखा है, और यहाँ पे देखो जब तुम कुछ यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे इसके अंदर, तुम जब जैसे नाम सोन कुछ भी लिखते हो यहाँ पे, वो फिक्स हो जाएगा। बाद में सोचे नहीं कर सकते, बट हमें चेंज करते रहना है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है हमें। हम क्या करेंगे? यदि मैं सपोज करूँ मैं यहाँ पे पाथ लिखूं तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्या होगा बताओ मुझे? पाथ प्रिंट होगा, उसके अंदर वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, बट हमें उसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? अब क्या होगा कि कर्ली ब्रैकेट स्पेसिफाई करेगा कि यहाँ पे जो हम दिए हैं ना उसका उसके अंदर पे जो वैल्यू वो आपको रखना है। क्लियर? इसके बाद क्या है? स्लैश होगा या स्लैश होगा, इससे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब होगा क्या? अब बताओ इसको कौन स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे? CL। तो CL में भी कौन सा वैल्यू है? कवर डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे CL में चला गया कवर डॉट जेपीजी। क्या जाएगा बताओ CL में? मतलब इसमें क्या चला गया? देखो इमेजेस आगे इसकी वैल्यू अंदर देखो, CL में क्या गया? कवर डॉट। क्लियर? अब पूरा पूरा स्ट्रिंग मिल गया हमें, और इसको हम कहाँ रखते हैं? याद है आपको? सिंगल कोट में रखते हैं इसको। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। और जब इसको हम देते हैं तभी तो रीड फंक्शन रीड कर पाता है। तो इसको पाथ मिल गया, कंप्लीट पाथ। ऑटोमेटिक लूप जब तक चलता रहेगा उसको पाथ मिलता जाएगा सारी इमेजेस का। बनता है यस और नो? केवल क्या चेंज होगा? CL चेंज होगा, और इस तरह से वो सारे इमेजेस को क्या कर देगा? रीड कर लेगा ओपन रीड फंक्शन के हेल्प से। और कहां स्टोर होगा ये? तो पहला अभी शुरू में पहले कौन सा इमेज होगा? ये वाला होगा। कौन सा पहला इमेज? उसको रीड किया, उसका वैल्यू कहां पे गया? नंपाई वैल्यू जो होगा वो कहां जाएगा? CORING में जाएगा। यस सर? अब देखो उसको, अब ये कौन सा वैल्यू है बताओ? इमेज है या नंपाई एरे वैल्यू है?
नंबर वैल्यू है ना उससे करस्पॉन्डिंग, उसको हम कहाँ ऐड कर देते हैं, इमेज नाम से जो हमने एम्प्टी क्या बनाया था लिस्ट ना, उस पे हम उसको अपेंड करते हैं। तो पहले का वैल्यू अपेंड हो गया, अपेंड हो गया हमें, और साथ में एक काम और करते हैं, हमें मैंने क्या बोला था हमको नाम भी तो चाहिए ना उसका अलग से, ताकि यही नेम हम कब यूज करेंगे, डेटाबेस में यूज करेंगे। जब तुम कैमरे के सामने आओगे तो तुम्हारा जो नाम है वही नाम क्या होगा वहां पे स्टोर होगा। उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, देखो ओएस पर स्प्लिट टेक्स्ट है, क्या है स्प्लिट, स्प्लिट टेक्स्ट फंक्शन। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को उसके एक्सटेंशन से अलग कर देता है। जैसे मान लो अभी हमने क्या लिखा है cover.jpg है ना, इसमें एक्सटेंशन पार्ट यही है ना, बताओ। तो ये अलग करके क्या करता है पता है, कुछ ऐसा करता है, इसको अलग अलग स्टोर करता है, और ये जाएगा आपका कहां पे, जीरो लोकेशन पे, ये जाएगा वन। हमें क्या चाहिए, केवल ये पार्ट चाहिए ना। तो ये एक्चुअली में ये जो फंक्शन है वो क्या देगा हमें, ये पूरा का पूरा यहां से आता है और से देखा, ये पूरा का पूरा हमें क्या देगा, कुछ ऐसा देगा, एक लिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगा, उसमें क्या होगा कवर और दूसरा वैल्यू क्या होगा डॉट, यही होगा ना। स्प्लिट कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब बताओ हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये कहां पर है, जीरो इंडेक्स पे है ना, ये जीरो हो गया ये वन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या अलग कर दिया। और ये पूरा का पूरा हमें क्या देगा बताओ मुझे, केवल और केवल कवर देगा, क्या देगा, तो नाम अलग हो गया ना। तो वो कहाँ अपेंड कर देंगे हम, क्लास में। तो क्लास में क्या चला गया, देखो पहला काम चला गया, यस सर। तो फिर से चलेगा, फिर सेकंड नेम लेंगे, फिर सेम काम होगा, उसका नंबर वैल्यू यहाँ अपेंड हो जाएगा, उसका नाम क्या है, नाम एलोन, एलोन उसमें चला जाएगा। फिर थर्ड बार चलेगा, तो अभी तीन ही इमेज है, तीन ही बार चलने वाला है, और ये काम होता जाएगा, और तीनों का क्या है, क्लास नेम बन गया। ये क्लास नेम है, तो प्रिंट क्या हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। तो क्यों किया समझ में आया आपको, उसी फाइल के नाम से सब कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक क्लियर है, तो अब देखिए थोड़ा सा आगे देखिए, कोई डाउट है किसी को, प्लीज बताओ यहाँ तक, एनीवन। हाँ थोड़ा डाउट होगा, रन करते जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। यस, So why CL has been used here? CL, Yes. You know how to use loop or loop? Yes. In use of in operator. Yes. Actually देखो ये क्या है, C in मतलब होता ही ये है, देखो for क्या है यहाँ पे, कौन सा जैसे देखो है कि यहाँ पे for loop यूज कर रहे हैं, for loop पे क्या होता है, लूप 1 by 1 चलता है। Yes. तो ये पता है CL क्या करेगा, इन यूज किया हुआ है, और बाद में है क्या, लिस्ट है ना। Yes. उस लिस्ट से पहला वैल्यू लेगा वो, कौन, CL लेगा, यानी CL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वैल्यू, क्योंकि फॉर लूप है, उस पर काम कर लिए, फिर जब जैसे लूप कंप्लीट होगा फिर वो सेकंड वैल्यू उठाएगा वहां से, फिर जैसे काम कंप्लीट फिर थर्ड वैल्यू को उठाएगा वहां से, ये काम करता है। तो CL का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने इन यूज किया है और उस पर फॉर लूप यूज किया है, तो वो पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू उठाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज को देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो एक काम और करते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी हमने क्या प्रिंट किया था बताओ, हमने बताया पहले तो लिस्टिंग किया हमने फाइल का, फिर हमने क्या किया, सारे का नाम क्लास में प्रिंट किया। अब एक काम और प्रिंट करके दिखा, प्रिंट क्या प्रिंट करूं, इमेज, याद है इमेज नाम से बनाया था ये जो है, इसको भी मैं प्रिंट करके दिखा, इसमें वैल्यू जाता है या नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं रन किया जाए इसको, जैसे यस ना, सारे इमेजेस का ये है, फर्स्ट इमेज का, सेकंड इमेज का, थर्ड इमेज का, सारे इमेजेस का आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो देखो यहाँ पहली बात स्टार्टिंग से, पहला वाला कौन सा है, इसका वैल्यू है ये माई लिस्ट का वैल्यू है, दूसरा किसका वैल्यू है ये क्लास नेम का वैल्यू है, और ये सारा किसका वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यस यहाँ तक, ये है पहले इमेज का क्या है, नंबर है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया, दूसरे इमेज का। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तीसरे इमेज का। ठीक है, कोई दिक्कत,
इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, ये बताओ फेस रिकॉग्निशन में हम करते क्या बेसिकली, व्हाट वी डू, क्या बिना एनकोडिंग किए हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फेस को, क्या बताओ मुझे, कर सकते हैं क्या? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, एक्चुअली हमें एनकोडिंग चाहिए ना सारे फेसेस का, जितने भी इमेजेस हमने यूज किए सबका क्या चाहिए, एनकोडिंग चाहिए हमें, चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे ना एनकोडिंग फाइंड करने के लिए। बताओ वन बाय वन निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे? तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बस पास कर देंगे ये लिस्ट और वो हमें फाइंड करके दे देगा सबका, ठीक है ना? यस सर ना? इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या है देखो, फाइंड एनकोडिंग। और किसका, ये बताओ मुझे किसका एनकोडिंग निकलता है? वही ना जो सारी इमेज का हमने डेटा स्टोर किया था, कहाँ पे किया? इमेज नाम वाले फोल्डर। ये सुनो, उसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एनकोडिंग्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो ये फंक्शन आने जानते हो तुम लोग पाइथन, ऐसे ही बनता है ना फंक्शन, और रिटर्न स्टेटमेंट होगा क्या, गौर से देखो यहाँ पे, समझो गौर से, इंपॉर्टेंट चीज है ये। होगा कुछ यूं इस तरह से, है ना? So we are going to create a function. Yes or no? This is a function with name find encodings. And what we are passing here as a parameter or argument? Image. We are passing image, not image. We are passing a list. हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे? List of image. कौन सा लिस्ट पास कर रहे हैं? Image. जिस सारे इमेज का जो हमने numpy वैल्यू जहाँ स्टोर किया था वो इमेज पास कर रहे हैं। कैसा? तो ये भी तो लिस्ट ही हुआ। अब ये देखो क्या होगा, यदि हमने सारा लिस्ट दे दिया, अब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, जस्ट टेल मी हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन दिस फंक्शन? यस एनीवन? हाउ मेनी पैरामीटर्स वी आर पासिंग इन दिस फंक्शन? Those who are 1 is correct, those who are 3 is incorrect. Actually we are passing one variable, one list we are passing. There may be multiple values inside this list, but we are passing only one now. Only one list, that is called one parameter. Clear? Okay. So now see, we have again taken the empty list. Why empty list? इसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे इमेजेस का हम क्या स्टोर करेंगे, एनकोडिंग। एनकोडिंग निकाल लिया, यहाँ पे अपेंड कर देंगे, एनकोडिंग निकाला अपेंड कर देंगे, एनकोडिंग निकाला और अपेंड कर देंगे। क्लियर है? फिर अब हम ये चीज मैनुअली नहीं कर सकते ना। अब बताओ हमने अभी मैनुअली 10 बार लिख दिया, ठीक है, हो सकता है इमेज हम बाद में बढ़ा दें 200 इमेज हो जाए, तो मैनुअली कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं। तो हमें लूप तो लगाना ही पड़ेगा, ऑटोमेशन करना होगा। ये सिस्टम खुद ही इमेज हमने वो सिस्टम खुद ही अपना निकाल ले, हमें कुछ नहीं करना, उसके लिए सिस्टम खुद ही क्या किया देखो, वही सर अगेन हमने यूज किया है कौन सा, फॉलो। ये पहला इमेज का वैल्यू कहाँ पे जाएगा, आईएमजी में जाएगा। वही सेम कुछ है जैसे मैंने सीएल में बताया था, पहले इमेज का नंपाई वैल्यू उठाएगा कहां पे रखेगा, आईएमजी। और हम क्या करते हैं उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पीजीआर में होता है, हम उसको आरजी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास फंक्शन है ना, एज यू नो इन लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी हैव फेस एनकोडिंग फंक्शन, वी हैव फेस एनकोडिंग फंक्शन। यस और नो? व्हाट इट डू, it just find the encodings, means first it will recognize the face in your photograph and then it will find the corresponding 128 values. So how it will find the values, suppose this is our face, so it will find the ages of our face so that it can recognize. So ये total 128 ages ड्रॉ करता है और सबके वैल्यू को वो क्या करता है, क्लियर। और वही इसके लिए यूनिक होता है, हर फेस का एक यूनिक होता है। Clear? So this function will just find encoding of first image and will be stored in what, this variable. और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका encoding उसको encode list में append करते हैं। पहले का हो गया, फिर loop repeat होगा ना, yes or no? loop फिर से repeat होगा, loop जब फिर से repeat होगा तो second value को लेगा, second का कलर चेंज करेगा, वो encoding find करके फिर से इस variable में जाएगा और उसको फिर से append कर दिया। मतलब सारा encoding कहाँ जमा हो रहा है ये बताओ मुझे, ऐसा ना वेरिएबल, यस इसमें हो रहा है। एंड बाद में जितने भी इमेज, मान लो अभी 3 इमेजेस है ना,
मान लो 100 इमेजेस बना, होने दो, ये खुद ही फाइंड कर लेगा, हमें कैसे नहीं करना है, बस हमें इमेज ऐड कर देना। अब हमें करना क्या है कि मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब कोई नया एम्प्लॉय मान लो ये ज्वाइन किया, तो हम इससे क्या करेंगे, मांगेंगे ना, व्हाट वी विल फाइंड, वी विल आस्क फॉर द पासपोर्ट साइज इमेज, yes or no, we will ask for the passport size and we will just take it and we will just paste it in the code and nothing else we have to do. And one more thing I will do, rename the image with their name. Yes sir, only these things we have to do. Clear everyone? Clear? So this is the way of what finding the encodings. Clear है बच्चों? यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। और जब हम अब हमें क्या है ना, देखो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं ये सोच के नहीं हम मैनुअली करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं। अब हमें बताओ अभी मान लो इसके कितने इमेजेस हैं, मान लो बाद में 100 इमेज हो गया, सारा काम फिर से करेंगे क्या, ऑटोमेटिक लूप लगा दिया है, खुद ही कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑल दिस। क्लियर है? लूप करते ही इसीलिए एक ही काम को हमें बार-बार करना होता है, एक ही तरीके को हमें बार-बार रिपीट करना होता है, then we use loop. When we have to repeat the same statement multiple times, then we will use for. And when we have to use multiple line of code, multiple places, then what we use? Why I told you that? I told you that when we need to execute the same code multiple times, then we will use loop. Same code is running for the first image, same code will run for the second image, same code will run for the third image. That's why we are using loops. But what I told you that I asked that suppose if we are having one or more number of statements and we have to use in multiple places, then what will be function? Yes, right. So it will, what will happen? What it will do? It will just minimize the length of the code. अब मान लो आप 5 लाइन का कोड है, आपको 10 जगह यूज करना, उसको रिपीट करते जाओगे तो क्या होगा, 10 टाइम्स यूज करोगे तो 5 लाइन का कोड है तो कितना 50 लाइंस हो जाएंगे, कितना लेंथी हो जाएगा। और यदि मैं इसको फंक्शन के अंदर रख दूं, एक ही बार में 5 टाइम्स लिखना पड़ा हमें, अब हर एक बार यूज करना है तो बस एक बार फंक्शन का नाम कॉल करना होगा, तो जहां पे 5 लाइन वहां पे एक लाइन से काम हो जा रहा है। Yes sir, that is the benefit of using here, and this is the benefit of using. So when you have to execute the same code multiple times, then we use. Clear? This is how we can do. So I will stop right now. Okay, this part only, and in next class I will explain all the remaining. So tell me if you are having any problem right now, just you can tell me. I will solve the problem. Yes, anyone? Just if you want to copy the code, just you can copy. Or otherwise, I will send also in your group. Just write everything. So you know, I have done approximately 30% work. We have done. You know, 30% work of our project we have done. 30% plus. Now tell me, it is very complex or simple? Because unless and until you don't try to run the code, it is complex. But when you are able to run, when you are able to execute the code, then it is very simple. Because all these things I am going to explain in detail. Yes or no? Not only explaining, I am also showing the result also. Yes or no? What is happening here? Just try to execute the code in your system. Then only you can get, you know, the result. Then you can understand the logic. Clear, everyone? I will check each and every all the codes that I have taught you in the classroom. Your system. This will be in your system. Clear? What is the timing of this class? 10.
11 to 20, 12 none. Please 15 minute, 1 hour class. Just anyone is having any doubt, please let me know. Yes, anyone? Otherwise, I will ask you. Okay, just let me ask. Then I want to check imaging sequentially. Then I will use I can use sorting method. What do you want? No, sir, more answer. So you just want to sort it. Sequence. Yes, sir. Yes. So how you will sort? No need to sort here. For this, you can use sorting function. You can use. How you will sort? You will just find the list and you will use list dot sort function. It will just sort it. But no need to sort it. Because name concern sequence में yes, you can change it. But just tell me the first person can, and his name is suppose Rahul. Yes, no? You stored the images. Second person can. Okay, and his name is Aman. Third person came, and his name is what? Yoyo Honey Singh, suppose. So now we have 3 persons. Yes or no? So now just tell me. The first was starting with R. Second was with A. Third one was with Y. So this will store in which folder? Image folder. So just tell me why you want to rename it or why you want to sort it. Because just we have to find the name only, no? We don't have to display the images in the sorting. We have to just get the name. We have to just get the encoding spelling. So you don't need to find it. But if you want, then you can just use sort function. Here, okay. Now, anyone? Yes, anyone? Is there any doubt? Wait. Any doubt? Everything is clear? Everything is crystal clear? Yeah, actually, I shared in all the facts. I think I just left in your list. I will share. Okay. Just let me share right now. Otherwise, I will just share. I thought that I shared in all the classes. Yeah. 21. Only one bit. Okay, now I have said just look at it. Open the class. Don't open it. So have you completed? Don't worry, I will share the. I have already shared. You will get it. Yes or no? Last one and this one. Clear? I think something is missing there.